फ्रेंड्स गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स MCO 21। एंड सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट शॉर्ट नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स एंड देन डिफरेंसेस. So like it's very difficult to cover in one video, but let's see. But like I would advise you to watch this video till the end, right, to have a complete understanding and perform well in the exam. Okay, fine. And the first question, let's start with this. Define managerial economics and explain the nature and scope of managerial economics. Now this question has come a lot of times in the exam. You need to write first the definition of managerial economics and its fundamental nature, and in the nature you can write all these points like it is a science, it is an art, and it helps in the resource allocation. It has the components of micro environment and macro environments both. It is quite dynamic, it changes with the situation. And in the scope you can write about this demand analysis and forecasting, cost production analysis, profit management. Like these are the thrust areas where this managerial economics can be used. In capital market we have got its application, and while making a SWOT analysis of the business environment. Fine, let's move on to the second question. Discuss with example how managerial economics is an integral part of business activity. Justify. So you need to write the applications of managerial economics in various business processes, like the first and the foremost, that is demand forecasting. This is one of the very important uses of managerial economics. Then while making pricing strategies, while making production decisions and cost analysis, while making decisions about the investments, or whether you want to make analysis of market or risk. So all these areas you can write in this particular question. Fine, let's see question number 3. Managerial economics serves as a link between traditional economics and decision sciences for business decision making, and how managerial economics is related to different disciplines. So obviously, like managerial economics, basically a link between traditional economics and managerial economics, and this is how it works. You can write all this definition of traditional economics, then the different decision sciences, and how it acts as a link. You can give the examples how this managerial economics is integrated with the traditional economics. And these are the different disciplines or the subjects which are linked with managerial economics. So like a macroeconomic theory and macroeconomic. So both these theories are the basic of any economics. So both are related with this. This is also related to the research, I mean operations research, and it is related with the statistics, which is a part of mathematics, and it is related with the theory and accounting part. So like that you can explain the answer. Question number 4. Discuss the profit maximization and value maximization objectives of the firm. Now these two are the important objectives of any firm, and managerial economics basically identifies these two. So basically a firm exists to make profits and also increase the value of the investments or wealth creation. So in profit maximization you can write the different strategies, you can give the examples, and then in value maximization you write the features, its practical applications in managerial economics. Okay, question number 5 is on law of demand, and with the help of demand schedule and demand curve. This is simple question. We have studied this in the junior classes, I mean class 11 and 12. So no problem with this. Write the assumptions, exceptions, then why demand curve slopes downward. So these are very simple concept. Okay, question number 6. Discuss various determinants of demand. This is one of the very important question of managerial economics. So you can write about the price of the commodity, how it affects the demand, then how the price of the related goods, I mean substitute goods and complementary goods,
how they affect the demand, and how the income of the consumers affect the demand, how the the taste preferences and style of the customers affect the demand, and how demand is affected by the expectations of price change in the future. That is very quite speculative. Okay, in question number 7, what causes a movement along the demand curve and shift in the demand curve? Write with the help of the diagrams. Diagrams is a must. You must practice these diagrams properly. First, you write the definition of what is movement along the demand curve and the two types of movement. What causes the movement? Like, what are the reasons for the movement of the demand curve? And then its important effects. Then come to shift in the demand curve. This is the shift in the demand curve. Write its definition, its important causes, why there is a shift in the demand curve. Draw this diagram. Try to explain the diagram as far as possible, and like that. Fine. So these are the different types of shift in the demand curve. So the first shift is like extension or increase in demand, and इसका just उल्टा होता है contraction and decrease in demand. So you can write this, draw the diagrams, and this is again contraction and decrease. Okay, let's move on to question number 8, which is on price elasticity of demand. Explain this concept. Write the determinants of price elasticity of demand and explain the various types of price elasticity of demand along with suitable examples. Very good question. Lot of time it comes in the exam. As we know, the degree of change in the demand due to change in price, so that is called price elasticity of demand. You can write this formula. You can give a practical hypothetical example of this, and then the determinants of price elasticity of demand. These are very important, like availability of clothes substitutes, nature of commodity, income of the consumers. So there are a lot of factors. I mean, the determinants of demand and determinants of price elasticity of demand, so not much difference. Okay, then comes different types of price elasticity of demand. This is important. We have done this in the previous classes also. So 5 types are there. One is perfectly inelastic, where PED is equal to 0, price elasticity, and just a reverse of this is perfectly elastic, where demand changes with slight change in the price. Unit elastic, where the degree of change in demand is equal to degree of change in the price. Then comes inelastic, where there is a small change in the price but there is a large change in the quantity demanded. So like that, draw the figures, try to explain the figures, give examples. That's the best way to score good marks. Fine. Question number 9. What is demand forecasting? And discuss the various techniques of demand forecasting. It's very very difficult job to forecast the demand of a particular goods or services, and also you are asked to explain the different sources of data used in forecasting of demand. So first write the definition of this, and these are the different sources of data which are collected for forecasting demand. So these 3 are very important: expert opinion, survey, and market experiments. These are very simple sources of collecting market data, and write brief about them, give examples. And these are the various demand forecasting techniques which are used in managerial economics. So there are as many as 7. The first one, regression analysis, one of the very important analysis. Then time series analysis can be done. Exponential smoothing, that is one of the very good technique. Market research is a very common technique. We can take the the opinion of the salesman or sales staff to collect data about that. We can collect Delphi method, I mean to take the opinions of the experts, and one more, barometric method. So these 7 demand forecasting techniques are very very important for your exams. Okay, so briefly expand them, give examples, and okay. Then question number 10, explain short run and long run production function and discuss the returns to scale with the help of production function. Okay, so first you need to write what is this production function. Give this formula, Q equal to
function of LCN, where L is labor, C is capital, and N is land. Then write about the production function with one variable, I mean in the short run. This is, you know, short run production function or production function with one variable. It is one and the same. तो यहाँ पे TP, AP, MP इनके बारे में आपको लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, एक शेड्यूल बना सकते हैं TP, MP, AP का रिलेशन बताने के लिए, एंड इसके बाद इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसमें ये डायग्राम आपको लगेगा. एंड जब हम लोग लॉन्ग रन फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आइसोक्वेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, प्रोडक्शन आइसोक्वेंट. सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाई जाती है ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ एंड बाय अप्लाइंग द डिफरेंट फैक्टर्स फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल. एंड अगेन इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप ड्रॉ कर सकते हैं, विच इज़ समथिंग लाइक दिस. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं. डिस्कस द मैनेजरियल यूजेस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन with suitable example. Describe the limitations of different types of statistical analysis used in the estimation of production function. So these are the few some important uses of production function. Resource allocation में help करता है. हम लोग production function से determine कर सकते हैं what is the optimal input level, and we can also forecast output level. It helps to understand the relation between input and output, then help in cost effective production, because जब हम लोग कोई भी ऑप्टिमल लेवल या फिर आउटपुट लेवल को डिटरमाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो सकता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल सकता है. तो लाइक दैट. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो हम लोग यूज़ करते हैं इन एस्टिमेटिंग प्रोडक्शन फंक्शन. नाउ ये मेथड बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है, टाइम सीरीज एनालिसिस. तो प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए आगे की जो प्लानिंग है उसके बेस पे हम लोग करते हैं. एक क्रॉस सेक्शन एनालिसिस है, ये भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसको भी यूज़ करते हैं. एंड वन मोर दैट इज़ engineering analysis. So this is also very popular, very modern method in fact. कुछ एक लिमिटेशंस भी लिख सकते हैं आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की. ओके, क्वेश्चन नंबर 12. Discuss with diagram the law of diminishing marginal returns. Now just now I was telling you about कि TP, AP, MP इनका रिलेशन. तो ये जो लॉ है बेसिकली उसी से रिलेटेड है, जहाँ पे 3 स्टेज होते हैं, जहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्शन इंक्रीज करता है एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन इट डिक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, and then becomes negative. So this is what is explained in this particular diagram. So practice this, the 3 stages and the relations. You can write about the assumptions also, assumptions of the law. Fine. क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं. कॉस्ट फंक्शन पे है, आपको इसको लर्न करना है. डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन, व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन एंड द मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग कॉस्ट फंक्शन. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. तो कॉस्ट फंक्शन के लिए ये फॉर्मूला याद रखें, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन में था वैसे ही कॉस्ट फंक्शन F + V/X. एंड इसके ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं, जहाँ पे प्लांट साइज, आउटपुट लेवल, देन प्राइसेस ऑफ द इनपुट्स, नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेजरियल एफिशिएंसी. तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं कॉस्ट फंक्शन के. एंड कुछ एक मेथड्स हैं, ये 3 मेथड हैं बेसिकली, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग एंड इकोनोमेट्रिक मेथड, mostly used in estimating the cost function of a given output. Fine. कुछ एक यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन की जब हम लोग बात करते हैं. एक तो डेटा इश्यूज आ सकती है, सफिशिएंट डेटा इसमें चाहिए आपको डिसीजन लेने के लिए, एंड आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट ड्राइवर्स और फिर उसके रिलेशनशिप्स. तो इसके लिए भी आपको एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए. And you also need some professional techniques and methodologies to estimate cost function. So like that. Some managerial uses देख लेते हैं cost function के. Basically cost का behavior, I mean cost मतलब कंपनी के लिए हाई हो रहा है, लो हो रहा है, किस तरफ जा रहा है उसका डायरेक्शन, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो ये एनालिसिस कर सकते हैं. प्रोडक्शन डिसीजन ले सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, हाउ टू मैन्युफैक्चर. उनकी प्राइसिंग का डिसीजंस भी ले सकते हैं, कितना रिसोर्स एलोकेट करेंगे, दैट कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स
in controlling the cost. Okay, let's move on to question number 14. Discuss short run cost function with the help of diagram and explain the important applications in managerial economics. तो शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं जिनके डेफिनेशंस आपको याद रखने हैं। टीएफसी, टीवीसी, टीसी, एएफसी, एबीसी एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो ये हम लोगों ने 11-12 लेवल में भी पढ़ा है, नो डाउट अबाउट दैट, यू कांट डिनाई दिस। and this is the schedule which you can prepare, but it needs a little bit your tactical thing because it should be divisible so that you don't get in points. and ये diagram को भी explain कर सकते हैं। and ये है average and marginal curve का diagram जो हम लोग short run cost analysis में करते हैं। एंड दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस। ये जो शॉर्ट रन कॉस्ट एनालिसिस है, ये 4 मेन एप्लीकेशंस होते हैं बिजनेस में। सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऑप्टिमम आउटपुट लेवल। एक कंपनी को कितना मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए, सो दैट कैन बी फाउंड आउट। एक और है ब्रेक इवन आउटपुट लेवल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे कंपनी को ना तो प्रॉफिट ना लॉस हो। एंड प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन एनालिसिस, जहाँ पे कंपनी को मार्जिनल प्रॉफिट मिले। एंड ऑपरेटिंग लिवरेज। एंड यहाँ पे मैंने ब्रेक इवन आउटपुट लेवल का एक डायग्राम बनाया बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में अलग से ही आ सकता है, आपको पूछ सकता है। एंड इसके एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ये भी आप डाल सकते हैं टू एक्सप्लेन द आंसर, सो लाइक दिस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। And let's see question number 15. Explain with the help of diagram profit maximizing output in the long run. So just now we concluded with short run. This is in the long run. And types of long run cost. 3 types are there. So same like total cost, average cost, marginal cost. तो ये तीनों ही इकोनॉमिक्स के मेन 3 कॉन्सेप्ट हैं, टोटल, एवरेज, मार्जिनल।
must uh, learn for this exam, the different types of markets. And then the factors that determine the nature of competition. So in this you can write पे फर्म को मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करती है व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज
बैरियर्स हैं, लीगल बैरियर्स हैं जो लॉज रेगुलेशन से रिलेटेड हैं, कुछ एक स्ट्रैटेजिक बैरियर्स का भी सामना करना पड़ता है, एंड बिल्डिंग एक्सेस कैपेसिटी, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बैरियर, बिकॉज अगर सेल अगर सफिशिएंट नहीं है तो द फर्म विल बी इन प्रॉब्लम्स. देन प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बैरियर है फॉर ए फर्म, स्पेशली फॉर ए लार्ज फर्म, एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ये ऑब्वियसली इट्स अंडरस्टूड फैक्ट कि वेन एवर ए कंपनी इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट, there are a lot of risks involved in its success. Then we have factors determining the barriers to entry. So more or less these are legal barriers, capital cost. I mean initial, how much is the initial capital cost is going to be borne by the firm, vertical integration, optimal scale production, and product differentiation. So these 5 factors needs to be considered by the firm. Fine. Next is optimization concept, explain the optimization concept while choosing the best alternative with example, and also explain the constraints of optimization technique. बढ़िया क्वेश्चन है, एंड फर्स्ट तो आपको सबसे पहले डिफाइन करना है कि ये ऑप्टिमाइजेशन कॉन्सेप्ट होता क्या है, व्हाट इट इज़, एंड देन राइट द एलिमेंट्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन concept like these 3: decision, objective, and feasible set. And when we talk about the constraints, its limitations, its hindrances, so these points can be written like there are some constraints regarding the budget, cash, production capacity, that can also act as a limitation. Resource constraint is there. Then market demand, अगर market demand अगर product की अच्छी नहीं है, so that may create a constraint. कुछ एक कंस्टेंट्स हो सकते हैं लीगल लॉ को लेके, एंड कुछ एक टाइम को लेके भी हो सकते हैं. फाइन. तो दीज आर द फ्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. लेट्स वन मोर इज लेफ्ट, आई थिंक. या 25. डिस्कस द प्रोसेस एंड टेक्निक्स ऑफ टेकिंग डिसीजंस एंड द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. एक्सप्लेन द रोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट इन दिस रिगार्ड. सो व्हेन वी टेक डिसीजन अंडर रिस्क लेवल, सो what is this concept all about, so that what you need to write here, then slowly moves on to the process of decision making under risk. So whenever a manager under risk, he has to take decisions, no doubt about that. So he needs to identify the different types of alternatives available to him, and then he assesses the probabilities, then expected values, then what is the risk aversion, what is the level of risk, and then finally he makes a decision. Like that, some techniques of decision making under risk. These 3 techniques are quite popular. Among them, this decision tree is the most important one. Learn this properly. It's very important one for your exam. Sensitivity analysis is also there. Then decision tree, its steps, its practical uses, so like that. And when we talk about the decision under uncertainty, again write the concept, like clear the concept here of this uncertainty, and then how a manager will take decisions under uncertainty. Okay. Now, role of a managerial economist. And in this part, let's see the short questions and differences between type of questions. These are again most important questions, so you must revise them before going to the exams. Okay, so the first difference between microeconomics and macroeconomics, very simple one. Lot of times in the previous videos I have explained this. The second one is individual demand curve and market demand curve. You may be asked to write the examples and also to draw the diagrams of these 2 concepts. Okay, then we have a long list of different types of cost. One of the cost is a must in the exam. I mean, like accounting cost and economic cost, historical cost and replacement cost, actual cost and opportunity cost. This one, in fact, very important one. And few more are there. Explicit cost and implicit cost. Always write this with examples. Then one more, demand estimation and demand forecasting.
This difference also came in the previous exams quite a number of times. Always try to give examples. You will be asked to give examples, in fact. Then we have the difference between direct cost and indirect costs, fixed cost and variable cost, then short run cost and long run cost. This is also quite very important. Again, marginal cost and incremental cost. तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जाम्स. इसको भी रिवाइज करना है, अच्छे से लर्न करना है, समझ लेना है. बाकी यू कैन ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स. द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, ये थोड़ा सा मैथ्स से रिलेटेड है, तो इसको जनरली डिफाइन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट यू कैन गिव एग्जाम्पल्स, नो डाउट अबाउट दैट. Then the difference between movement along the demand curve and shift in the demand curve. तो ये डिमांड वाले चैप्टर से है. देन प्रोडक्शन फंक्शन के चैप्टर से है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. लाइक दैट डिफरेंस बिटवीन संक कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइन, नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं. इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है एग्जाम्स में अलॉन्ग विद द लॉन्ग क्वेश्चन. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम्स में. ओके, अब आगे देखते हैं शॉर्ट नोट्स. नाउ शॉर्ट नोट ऑन इनकम इलास्टिसिटी. सो फर्स्ट यू विल डिफाइन दिस एंड देन राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी. ड्रॉ द डायग्राम्स फॉर ईच टाइप ऑफ इनकम इलास्टिसिटी, right? So this is how this is zero income elasticity, like that, and some managerial applications of income elasticity. The second short note is on equimarginal concept. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम, बहुत बार आता है एग्जाम्स में, तो इसका इसकी मतलब कॉन्सेप्ट को समझना है. एंड ये शेड्यूल बना सकते हैं आप. ये इनफैक्ट आपके इग्नू के स्टडी मटेरियल्स में भी है दिस शेड्यूल. ओके, द थर्ड शॉर्ट नोट इज़ ऑन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट नोट्स में, तो डू प्रिपेयर दिस क्वेश्चंस वेल and always try to look in for the managerial applications, I mean uses of these different types of costs in managerial economics. One more very important question, opportunity cost principle. So this one, like this is the concept, and then give examples so that you would have a fairly lengthy answer. PPC, production possibility curve. You can draw this, you can draw the schedule also. There is a graph of PPC that also you can draw along with the assumptions. Okay, the next very important one, law of diminishing marginal utility. इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, क्लास 11, 12 या फिर बीकॉम लेवल में. तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अननोन कॉन्सेप्ट नहीं है. तो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी को लेके शेड्यूल बना सकते हैं. एंड इसके डायग्राम्स, ये डायग्राम यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो यू कैन प्रैक्टिस दिस डायग्राम. ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन द डायग्राम कि व्हाट इज़ ऑन द एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज़ ऑन द वाई एक्सिस, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द कर्व, लाइक दैट. दैट वी हैव डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल. अगेन ए गुड क्वेश्चन, लाइक ये क्योंकि MCO 07 में भी है ये चीज़, तो डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल इज़ अ वेरी important concept for commerce student. Okay, then we have MRTS, marginal rate of technical substitution. ये भी important concept है इकोनॉमिक्स का, एंड इसका ग्राफ और एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ये आप अपने मन से हाइपोथेसिस करके कर सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ इनविजिबल हैंड. ये एडम स्मिथ का एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट जो उन्होंने कितने साल पहले इंट्रोड्यूस किया था, जो अभी भी पॉपुलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड इन इकोनॉमिक्स. The next concept is incremental concept. So this concept, इसके ऊपर भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिल सकते हैं, इनके कंपोनेंट्स, इनके बेनिफिट्स, इनके यूजेस. So like that you can compose your answer. And then we have central problems of an economy or choice problems of an economy. तो 3 प्रॉब्लम है, what to produce, how to produce and for whom to produce. तो इनको आपको डिस्क्राइब करना है along with the examples. Fine. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग कर्व. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि लाइक बेसिकली
जो फर्म यूज़ करती है, हाउ इट यूजेस दिस लर्निंग कर्व इन देयर फर्म्स। तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये डायग्राम बना सकते हैं इसके अंदर। एंड लेट्स सी द नेक्स्ट वन, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। So this concept also might strike in the exam. And then we have opportunity set. इसकी डायग्राम है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दिस वन। तो यू कैन प्रिपेयर दिस फॉर द एग्जाम। रिग्रेशन एनालिसिस बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग मार्जिनल आई मीन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर फोरकास्टिंग। ओके, न्यूमेरिकल एग्जांपल दे सकते हैं। एक शॉर्ट नोट आप कर सकते हैं डिमांड फंक्शन पे। एंड दिस इज़ द डिमांड फंक्शन, इसका फॉर्मूला, इसका डेफिनेशन और इसके वेरिएबल्स। सो ये सारे आपको लर्न करने हैं फॉर द एग्ज़ाम, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क प्राइस इलास्टिसिटी। अगेन इलास्टिसिटी चैप्टर से है ये क्वेश्चन। एंड इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एंड इसके एप्लीकेशंस। सो ये दो चीज़ें अभी आप डिस्क्राइब अगर करते हैं तो आई थिंक एग्ज़ाम्स में आपको अच्छे भले मार्क्स मिल सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। न्यूमेरिकल एग्जांपल भी दे सकते हैं आर्क इलास्टिसिटी पे, लाइक दैट पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड यूनिट इलास्टिक। ओके, इसके फॉर्मूलाज एंड यू कैन ऑल्सो गिव the example. Fine. The next short note is on Herfindahl index. तो ये क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है एग्जाम्स में, बहुत अननोन क्वेश्चन है इनफैक्ट। दिस इज़ माय सजेशन, मोर और लेस आपको कभी भी मिल सकता है ये क्वेश्चन, Herfindahl index, and that's all. So these are the short questions that you must revise in the exams. And I hope your exam will go well. And thank you very much for watching this video, and a very best of luck.